we will be solving these four sums of practice at 5.3. So let's not beat around the bush and start the topic. Fourth question. Let me just revise the slope formula. Slope of a particular line is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1. This पूरी exercise, the whole exercise is based on this formula. If a 1 comma minus 1, let me just write it a bit down. Fourth question. If a 1 comma minus 1, b 0 comma 4, and c minus 5 comma 3 are vertices of a triangle that find the slope of each side. Now let me just make the question easier for you. आपको ये तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए हुए ए बी और सी. आपको इस साइड का स्लोप निकालना है, इस साइड का स्लोप निकालना है, इस साइड का स्लोप निकालना है. क्वेश्चन becomes easier for you now. Let a 1 comma minus 1 is equal to x1 comma y1. Let b 0 comma 4 is equal to x2 comma y2. Let c minus 5 comma 3 is equal to x3 comma y3. ये आपने नाम दे दिए. अब स्लोप ऑफ लाइन, or let me just specify it. Slope of side AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which will be how much? y2 minus y1, 4 minus of minus 1 upon x2 minus x1, 0 minus 1. Minus into minus plus 4 plus 1 upon minus 1, which is minus 5. Then slope of side BC, चलिए ये हो गया. अब ये slope of side BC is y3 minus y2 upon x3 minus x2. y3 minus y2 is 3 minus 4 upon minus 5 minus 0. 3 minus 4 is minus 1. Minus 5 minus 0 is minus 5. Minus minus gets cancelled. Answer is 1 upon 5. Now slope of side, आपने ये साइड का स्लोप निकाल लिया, ये साइड का निकाल लिया. अब ये साइड का स्लोप ऑफ साइड AC is equal to y3 minus y1 upon x3 minus x1. y3 minus y1, 3 minus of minus 1 upon minus 5 minus 1. 3 minus into minus plus 3 plus 1 upon minus 6, which gives us 4 upon minus 6, which is minus 2 upon 3, because 2 2s are 4, 2 3s are 6. This sum becomes easy for you now. Take a good look at this and we will proceed to the next sum. Coming to the next question. Fifth question. आपको 4 पॉइंट्स दिए जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं. आपको बताना है कि ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम परफेक्टली बना रहे हैं कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप याद रखोगे तो a parallelograms opposite sides are parallel, which means this side and this side is parallel and this side and this side is parallel. Yes. So when you see if these two lines are parallel, मतलब इनका स्लोप सेम होगा. पैरेलल होते तो ऑफ कोर्स एक या ऐसे ही जाएंगे ना टेढ़े. तो जब एग्जैक्ट एक दूसरे को नॉट इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे तो इस लाइन का जितना स्लोप है इस लाइन का उतना ही स्लोप होगा. सो इफ फॉर दिस particular quadrilateral to be a parallelogram, these both should have
same slope, and this both should also have same slope. So we'll try to solve this. Slope of side AB is equal to, sorry, let's first take this as x1 comma y1, this as x2 comma y2, this as x3 comma y3, and this as x4 comma y4. This is x4. Slope of side AB, y2 minus y1 upon x2 minus x1. 2 minus of minus 7 upon minus 1 minus of minus 4. Minus 1 minus of minus 4. Minus into minus plus. 2 plus 7 is how much? 9. Minus into minus plus. Minus 1 plus 4 is plus 3. 3 ones are 3 3s are. So this is 3. This becomes here 1. Next, to find slope of side DC. Slope of side DC is equal to DC y4 minus y3 upon x4 minus x3. Y4 minus y3 minus 4 minus 5 upon 5 minus 8. This upper value becomes your minus 9, this becomes your minus 3. Minus minus cancelled, 3 ones are, 3 3s are. This becomes your 3, this is your second one. आपको इसका वैल्यू 3 आ गया, इसका वैल्यू 3 आ गया. अब आप इन दोनों का फाइंड आउट. स्लोप ऑफ साइड AD is equal to AD y4 minus y1 upon x4 minus x1. y4 minus y1 minus 4 minus of minus 7 upon x4 minus x1. 5 minus of minus 4. Minus into minus plus. 7 minus 4 is how much? 3. 5 plus 4 is 9. 3 ones are, 3 3s are. This becomes, this gives you answer 1 upon 3. Take this as 3. Then slope of side, slope of side, ये आपको 1 upon 3 आया. BC, slope of side BC is y3 minus y2 upon x3 minus x2. y3 minus y2, 5 minus 2 upon 8 minus of minus 1. 5 minus 2, 3. 8 plus 1, 9. 3 ones are, 3 3s are. Gives us answer 1 upon 3. 4. अब आप देखोगे इनकी वैल्यू सेम आ गई, इनकी और इनकी वैल्यू भी सेम आ गई. फ्रॉम 1 2 3 and 4 quadrilateral ABCD is a parallelogram. This is a very simple sum जो आपको 3 मार्क्स तक आ सकता है. आपको ये सब 2 मार्क्स के लिए और इसके आगे के सम के लिए 3 मार्क्स के. So take a good look at this. कुछ डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो. So we will move forward to the next sum. We move on to our 6th sum. 6th sum states that if R 1 comma minus 1 and S minus 2 comma K are the 2 points and slope of line RS is equal to minus 2, you have to find value of K.
We start the solution. Now just to make you understand the sum, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए, दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका स्लोप दिया हुआ है, एक जो कोऑर्डिनेट अननोन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेट r1, -1 be equal to x1, y1 and s-2, k be equal to x2, y2. Therefore slope of line RS is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. 1. Then you substitute the values. y2 minus y1, k minus of -1 upon x2 minus x1, -2 minus 1. What slope of line RS is how much? -2. -2 is equals to minus into minus plus -2 minus 1 gives us -3. -3 is here in division. When it goes here, it is in multiplication. Minus into minus. When -3 goes here, it will become -2 into -3. K plus 1 will be minus into minus plus 2 3s are 6. Plus 1 goes there, it becomes -5. K will be equal to 1, 5. Very easy sum. सातवां क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस आपकी वैल्यूज अलग दी हुई है. सॉल्व इट. इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. टेक अ गुड लुक एट दिस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. We move on to the last sum of the lecture. What is given? PQ is parallel to RS. PQ RS के पॉइंट्स दिए हुए हैं. आपको ये भी पता है PQ और RS पैरेलल है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन PQ और स्लोप ऑफ लाइन RS क्या होगा? इक्वल. You just have to find out this unknown coordinate K. We suppose this x1, y1, x2, y2. This has x3, y3, and x4, y4. This becomes y2 minus y1 upon x2 minus x1, y4 minus y3 upon x4 minus x3, y2 minus y1, 6 minus 4, x2 minus x1, 3 minus 2, y4 minus y3, k minus 1 upon x4 minus x3, 5 minus 3. 6 minus 4 gives us 2, 3 minus 2 gives us 1, k minus 1 upon 5 minus 3, 2. You cross multiply it. 1 into k minus 1 is equals to 2 into 2. Directly it will give us k minus 1 is equal to 4. Minus 1 goes this side, plus 1. K is equal to 4 plus 1, 5. स्लोप क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो दोनों का स्लोप, अगर एक लाइन यहाँ है तो दूसरी लाइन उसके बराबर नीचे यहाँ ही होगी, सेम स्लोप पे ही होगी. इसलिए ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है तो इन दोनों का स्लोप फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज भी इक्वल है. उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर के का क्या आएगा? 5. Solve these sums at home. If you have any doubt, ask us on WhatsApp or in the comment section. Till then, take care, stay home, stay safe. And if you like the content, hit the like button. And if you have any friends who are in SSC or 9th standard, share it with those friends. Thank you.